Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is frequency distribution and diagrams of your core contents, unit number 3. First we define what is a frequency distribution. The organization of data in a table showing the distribution of data into groups or classes, together with the number of observations in each group or class is called frequency distribution. The organization of data. Suppose the aim students of education can be organized as this is group 1, group 2, group 3, and the number of observations in each group. So the organization of data in a table showing the distribution of data into groups is called frequency distribution. The number of observations falling in each group is called frequency distribution. The number of observations falling in a particular group or class is called class frequency and denoted by small f. A simple example to explain the frequency distribution: suppose the score of 5 students in a class test are given below. These are the score of the students in a class test. We just organize in a meaningful form by constructing frequency distribution. So the number of students who obtain 5 marks is 3. The number of students who obtain 6 marks is 1. Here just one student obtained 6 marks. The marks of 7 marks obtained by the number of students is 3. 1, 2, 3. 3 students obtain 7 marks. It is used just to summarize and transform the data in a meaningful form. This is the simplest form of a frequency distribution. But when the data size is large, so the construction will be quite different. So steps involved in the construction of frequency distribution. First step, data array. Arrange the data in ascending or descending order of magnitude. This is the first step to construct a frequency distribution, to arrange the data in ascending or descending order of magnitude. Second, range. Subtract the minimum data value from the maximum data value is called range. The difference between largest and smallest value of a data is range. Number of classes. The choice of the number of classes is depend on the data under study and the researcher. Means if the data size is large, the number of classes should be large. If the data is small, the number of classes should be small. However, a popular method is used to obtain the number of classes. Number of classes is equal to 1 plus 3.3 log n, where n is the total number of data size. So generally we take class from 6 to 15. The minimum number of classes should be 6 and the maximum number of classes should be 15, right? The next, class interval or width. Divide the range of the data already obtained by the number of classes. Determine the approximate size of the class interval denoted by h. If we divide the range by the number of classes, so the class interval h can be obtained. If the result in fraction, if the value of h is in fraction, then the next whole number is usually taken as a class interval. Suppose h is equal to 3.5, so we take 4. If h is equal to 4.1, we take h5. Class limits. The lower class limits is usually start from the lowest value of the data or a number less than it. Suppose the lowest value is 20, so we can start from 20 or 19. Add the class interval to the lower class limits. It generates the lower class limits of the next class.
and from the next class lower limit we obtain the upper class limit, proceed in the same manner till the last class. This can be understood by taking a simple example. Example, the list of IQ score for elementary class students is given below. 118, 150, 124. This is raw data. So we construct frequency distribution of the above data. Solution. First, arrange the data in ascending order of magnitude. 118, 123, 124, 125. This is in arranged form. Next step is find the range of the data. Subtract minimum data value, which is 118. This is the minimum data value and this is the maximum data value. So subtract 154 minus 118 is 36. This is the range. Now we decide about the number of classes. As the data size is small, so we take 5 number of classes. Our class interval can be obtained as. Generally, we take in classes from 6 to 15, but just to explain the concept of frequency distribution, I take the class in the number of classes is 5. So class interval 36, this is the range and this is the number of classes which we decide to convert the whole data in 5 classes. 36 divided by 5 is 7.2. This is in fractions, so we take the next whole number, which is 8. So our h is equal to 8. Now how to obtain the class limits? Range. So the class limits the minimum value is 180. So first we write 180. Next, 8 class interval to the lower limit. 180 plus 8 is equal to 126. Next, the next lower class limit 126 plus 8 is equal to 134. Next, 134 plus 8 is equal to 142. Next class limits 142 plus 8 is equal to 150. In this procedure, the lower limit is obtained. Next, how to obtain the upper limit? This is actually the sign of equal. Now, how to obtain the upper limit? The minimum value is 118. So we add h minus 1. 8 minus 1. 7. Which is equal to 125. In the next class, the lower limit is 126 plus h minus 1.
7 is equal to 133. Similarly, 134, the lower limit is 134 plus h minus 1, 7 is equal to 141. In the same manner, we obtained 141 plus 7, so it becomes 149. Next class will be 149. And the next class will be 149 plus 7, 157. Okay, so we can write as class limits. Lower limit is 118 and upper limit is 125. Lower limit is 126, upper limit is 133. Lower limit is 134, upper limit is 141. Lower limit is 142 here, upper limit is 149. So we express in this form. These are called the lower class limits and these are called the upper class limits. Now we can write how many observations falling in these classes. So it starts from 180 to 125 values falling in this class. So 1, 2, 3, 4. These 4 values falling in this class. So we can write as the frequency of this class is 4. And in tally column we can express as 1, 2, 3, 4. So from here it is clear. 130 is clear. Now from 126 to 133, 1, 2, 3, 4, 5, 6 till this one. 6 values we have in this class. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here we have, in this class we have 6 values. So these are cancelled. Next, from 134 to 141, 1, 2, 3. 3 values in this class. So 1, 2, and 3. So 3 value falling in this class. This is 3. Next, from 142 to 149, 142 to 149, 1, 2. Only these 2 values falling in this class. So 2 values. 1, 2. So 2. The remaining value falling in the last class, 150, and 2 values. So 2 value falling in this class. And frequency. The tally column of these 2, 1 line, 2 line. This is called frequency distribution. These are called lower limits and these are called upper limit of a class.
So this is frequency distribution. Already this example is solved for you. This is the final form of the example. Now we required what is class boundary. Class boundary is very important to find mean, median, and mode, etc. In the next units you will find to obtain mean, median, and mode. So class boundary is necessary for those topics. The class boundary are the precise point which separate one class from the other class. The class boundary preventing the gaps created by the class limits. What is the gap? Look at the gap between 118 to 125. But here this class start from 126. Suppose if we have 125.6 not appearing in this class, not appearing in this class. So a gap exists between these two classes, right? Similarly, if we have a value 133.8 not appearing in this class, not appearing in this class, so a gap exists in the class limits. So to make it continuous, these are discrete grouping. To make it continuous grouping, we use the concept of class boundary. What is the concept of class boundary? Class boundary can be obtained as the difference of this and this value is divided by 2. (126 minus 125) divide by, so is equal to 1. 1 divided by 2 is equal to 0.5. 0.5. So this 0.5 is subtract from the lower limits. 180 minus 0.5, 126 minus 0.5, 134 minus 0.5, 142 minus 0.5, 150 minus 0.5. So these become the lower class boundaries, and add this 0.5 to the upper class boundaries. 125 plus 0.5, 133 plus 0.5, 141 plus 0.5. So these become the upper class boundaries. The next is class mark. Class mark. The class mark indicate the number of middle of the class. So adding the upper and lower class limits dividing by 2, or adding the upper and lower class boundary divide by 2. If we adding the upper and lower limit divide by 2, class marks can be obtained denoted by X. Or if we add the lower and upper class boundary and divide by 2, the class marks can be obtained. So using the constructed frequency distribution of example of the previous example 3.2, construct the class boundaries and class marks. Look at 118, 125. Already we constructed this frequency distribution. Now we obtain class boundary. So subtract 0.5 from this quantity and add 0.5 to this quantity. Subtract 0.5 from this quantity and add to this quantity. So these become class boundaries. Now how we can obtain class marks? Add upper and lower class limits divide by 2. Class marks can be obtained. Or add upper and lower class boundary divide by 2. Class marks can be obtained. These are called class mark. Next, diagram. Diagrammatic representation of data. Simple bar chart or simple bar diagram. A simple bar chart is a rectangular diagram used to compare several categories. The bar chart can be plotted vertically, bar standing up, or horizontally, bar laying flat from left to right. The most usual type of bar is vertical. The horizontal axis represents the category and the vertical axis represents the value of those categories. We can explain this one from a simple example. Suppose the performance of 7 students in a class test
is given below. These are the number of students, and these are the marks obtained by the concerned students. So on x-axis we taken the students, the category, and on y-axis we taken the value or marks. So in this class we have the 12, so we plot 12. In this class we have 15, so we make a rectangle of 15. In this class we have make 13, so make a rectangle of 13. This is the simplest way how we can obtain in Excel. In Excel we can obtain is, suppose these are the students, 7 students, and these are the marks of the student. We just drag these and insert. This is the simplest form. This is the simplest form. If you want to change the x-axis by some name, some other things, so select edit. अगर आपने कोई और चीज़ लगानी है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आपने यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट हमारे पास है histogram. A histogram is a bar chart with zero space between the rectangle, used to represent continuous variable. In the construction of histogram, class boundaries is taken along x-axis and the class frequency y-axis represented by rectangle. Suppose हमारे पास ये एग्जांपल है, construct histogram of the following frequency distribution. ये हमारे पास ग्रुप डेटा है और ये हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसीज है. लेकिन अगर जब हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास क्लास लिमिट्स है, और इसकी थ्योरी में हमने पढ़ा कि हम क्लास बाउंड्रीज लेंगे, तो हम पहले इसको क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम करेंगे. तो कैसे करेंगे? 20 - 19 डिवाइड बाई 2, आपके पास 0.5 आ जाएगा. 0.5 इन लोअर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगे. इसके साथ 8 करेंगे तो आपके पास ये अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी. कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? एक्सिस पर आपने क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पर आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है. नंबर ऑफ कैटेगरीज आपके एक्सिस पर होंगे और यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी या वैल्यूज होंगे. एक्सेल में हम ऐसे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? देखिए ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज ऑटोमेटिकली मैंने लिखे हुए हैं और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है. तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे इंसर्ट करें. इंसर्ट में आप यहाँ पे आ जाए, फर्स्ट को स्किप करें. अब देखिए ये आपके पास है, लेकिन आप यहाँ पे इसमें गैप मौजूद है, तो आप इस पर चेक करें और यहाँ पे करें फॉर्मेट. आप ये गैप 0 कर दें और ये भी, तो आपके पास हिस्टोग्राम बन जाएगा. ये है आपका हिस्टोग्राम. नेक्स्ट है हमारा पेक्टोग्राम. A pictogram is used to represent the data by relevant pictures or symbols. This technique is used to easily and quickly understand the idea through images. In pictogram, a scale is a selection in such a manner that one picture represents the observations. For example, one picture represents 10 observations, one picture represents 100 observations. It depends on the scale of the researcher. For example, the number of cars arrived in a car parking at various days of a week is given below. यानी यहाँ पे हमारे पास डेज हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स जो अराइवल हैं उस पार्किंग में.
कंस्ट्रक्ट पेक्टोग्राम, इस किस्म के डेटा को हम पेक्टोग्राम से आसानी के साथ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। हम यहाँ स्केल ले लेंगे। 1 पिक्चर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट 20 कार्स। एक जो पिक्चर है वो 20 कार्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए मंडे में आपके पास 120 कार्स की अराइवल है, तो 120 मीन्स 120 कितने से, तो आपने नंबर ऑफ कार्स कितने हैं कि एक पिक्चर जो वो के बराबर है वो 20 के, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास 6, क्योंकि आपने 6 कार लेनी है। 6 1 पिक्चर रिप्रेजेंट 20 कार्स, 2 पिक्चर 40 कार्स, 3 पिक्चर 60 कार्स, 4 पिक्चर 80 कार्स, और 5th पिक्चर 100 कार्स एंड 6th पिक्चर इज 120 कार्स। नेक्स्ट डे में आपके पास है 150, तो देखिए 150 में एक कार 20 को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 140 कार हो गए, और ये हाफ कार, इसका मतलब है कि 10 हाफ कार। इस किस्म के डायग्राम को हम कहते हैं पेक्टोग्राम। नेक्स्ट, frequency polygon. A frequency polygon is a graphic form of a frequency distribution and gives the idea about the shape of a frequency distribution. It is constructed by plotting the class mass on x-axis and the corresponding frequency on the y-axis, connecting the plotted point by straight line. x-axis पर हम क्लास मास लेते हैं और y-axis पर हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। Example, construct frequency polygon of the following. These are the classes and these are the frequencies. So we can write as, first we obtain, calculate class mass. 40 plus 50 divided by 2, 45. 50 plus 60 divided by 2, 55. These are the class mass and these are their respective frequency. So on x-axis we take the class mass, and on y-axis we take the frequency, plotted the point and joined by line segments. This is called frequency polygon या frequency curve. Frequency polygon or frequency curve. Or we can construct an Excel. एक्सेल में हमारे पास एक कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, देखिए अब देखिए 45 55 ये तो क्लास मार्क्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा वो क्लास मार्क होगा 104 का, तो हम ऊपर 0 लगाएंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर देंगे, और नीचे 105 लगाएंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर देंगे। हम क्या करेंगे, जस्ट इसको क्लिक करें, ड्रैग करें, इंसर्ट करें, लाइन के पास आ जाए, फर्स्ट वाले सेलेक्ट करें तो आपके पास ये कर्व बन जाएगा। अगर आपने एक्सिस के डेटा को चेंज करना है, इसको फॉर्मेट को चेंज करना है, तो आपने डेटा को सेलेक्ट, चूँकि ये 1 2 3 हमने नहीं लगाने, हमने इसको एडिट करना है इससे, तो आपके पास ये एक्सिस पर 0 45 55 यहाँ पे क्लास मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव, लैटिन वर्ड ओजाइव, a graph of cumulative frequency polygon against the lower class boundary less than type or upper class boundary more than type is called cumulative frequency polygon. Example, construct the cumulative frequency distribution both less than and more than type from the following data. These are the data 10, 19, 20, 29. These are the class marks and these are the number of students in a particular class. First transform the class limit into class boundaries. क्योंकि हमारे पास ये क्लास लिमिट्स हैं तो हम इसको क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे। उसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे 20 माइनस 19 डिवाइड बाई 2, तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 को लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। अपर 8 के साथ इसके साथ 8 करेंगे तो ये हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। क्लास फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिखनी है। अब देखिए लिस्ट इन क्या है जो हमारे पास है जी, ये जो आपके पास है लिस्ट इन 9.5 से लिस्ट कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी स्टार्ट फ्रॉम 9.5 टू 19, इससे लिस्ट कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हम कहेंगे 9.5 से लिस्ट कोई फ्रीक्वेंसी 0। अब नेक्स्ट 19.5 से लिस्ट सिर्फ ये 6 है, बाकी इससे ज़्यादा है तो लिस्ट इन 9.6। फिर 29.5 से ये फ्रीक्वेंसी भी कम है और ये फ्रीक्वेंसी भी कम है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 बन जाएगा। सिमिलरली 39.5 से देखें ये फ्रीक्वेंसी कम है, ये भी कम है और ये भी कम है तो इसको 35 और जब प्लस 6 41 तो आपके पास 41 बन जाएगा। सिमिलरली 49.5 से लिस्ट हमारे पास 15 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 6 तो ये हमारे पास 49.5 से कम है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 59 तो ये सारी फ्रीक्वेंसी जो है ये 49.5 से कम है तो लास्ट में टोटल लिख लेंगे 68। अब मोर देन टाइप क्या होगा? मोर देन क्लास फ्रीक्वेंसी तो क्लास बाउंड्रीज हम यहाँ लिखेंगे 9.5 19.5 एज इट इज क्लास बाउंड्री लिखेंगे। अब इससे जो मोर है, अब देखिए मोर देन 9.5 से ज़्यादा है तो ये सारी फ्रीक्वेंसी 9.5 से ज़्यादा है। 6 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 12 ये सब 9.5 से ज़्यादा है तो हम इसको लिखेंगे टोटल को 68। फिर लिखेंगे 19.5 से जो ज़्यादा है 19.5 जो ज़्यादा है वो 10 25 15 12 तो ये सबको ऐड करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 10 25 15 प्लस 12। फिर 29 से जो ज़्यादा है 29 से जो ज़्यादा है वो 25 प्लस 15 प्लस 12 तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर 39 से जो ज़्यादा है 39 मोर देन 39 तो ये हमारे पास 15 और 12 इनका सम। फिर 49.5 से जो ज़्यादा है 49.5 से सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और फिर लास्ट 59 से ज़्यादा कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हम वहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हमारे पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसके ग्राफ्स को देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास बाउंड्रीज और यहाँ पे उसकी वैल्यूज़, इसको प्लॉट करेंगे और इस तरह इसको प्लॉट करेंगे तो ये हमारे पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पाई चार्ट। ए पाई चार्ट इज ए टाइप of graph they display in a circular graph. The pieces of the charts proportional to the fraction of the whole in each category. Each piece of the circular graph is obtained. अब देखिए हम इसको टोटल को सर्कुलर रीजन पे डिवाइड करते हैं और ईच पार्ट जो है वो एक सेक्टर को शो करेगा। एंगल फॉर ईच स्पेस, ईच पार्ट मल्टीप्लाई बाई 360 डिवाइड बाई टोटल। For example, represent the performance of student by pie graph. मैथ्स में 5 स्कोर, जनरल साइंस में 7, इंग्लिश में 10, उर्दू में 8। तो अब इसको पाई ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट, obtain the angle for each subject by using the following formula. Angle for each subject, individual score multiplied by 360 divided by total score. तो देखिए 5 7 10 8 तो इसका सम टोटल होगा तो 5 मल्टीप्लाई बाई इस फॉर्मूले
इंडिविजुअल को 5 मल्टीप्लाई बाई 360 डिवाइड बाई 30, तो आपके पास एंगल आ जाएगा 60 का। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 360 डिवाइड बाई 30, तो आपके पास एंगल आ जाएगा 84 का। सिमिलरली 10 मल्टीप्लाई बाई 360 डिवाइड बाई 30, तो आपके पास 120 का एंगल आ जाएगा। इन द सेम मैनर फॉर द नेक्स्ट वैल्यू अपने सर्कुलर पार्ट में इसको रिप्रेजेंट करना है।